Assalamu alaikum dear students, hope you are fine. As you know, we are reading a lesson, The Portrait of a Lady, written by Khushwant Singh. Today we will be discussing from para number 2nd, page 4 of the text Hornbill. So now let's start. My grandmother and I were good friends. My parents left me with her when they went to live in the city and were constantly together. She used to wake up in the morning and get me ready for school. Here writer Khushwant Singh says that my grandmother and I were good friends. मैं और मेरी जो दादी माँ थी हम बहुत ही अच्छे दोस्त थे. एक तरफ से वो मेरी ग्रैंड मदर थी but we were good friends. My grandmother and I were good friends. My parents left me with her and they went to live in city and were constantly together. So right here says that my parents left me with her. जब मेरी पेरेंट्स सिटी में रहने के लिए चले गए, they left me with her, with my grandmother. उन्होंने मुझे इसके साथ छोड़ा, अपनी ग्रैंड मदर के साथ, अपनी दादी माँ के साथ. एंड वी वेर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, और हम लगातार एक दूसरे के साथ थे. शी यूज टू वेक अप इन द मॉर्निंग, और मेरे साथ वो किस किस्म का सलूक करती थी. शी यूज टू वेक अप मी इन द मॉर्निंग, वो मुझे सुबह उठाती थी. शी यूज टू वेक अप मी इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, एंड शी वॉज getting me ready for my schooling. She said her morning prayer in the monotonous sing song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. She said her morning prayer, जो उसकी सुबह की दुआ होती थी. She was singing this song in a monotonous sing song. That means in an unvarying tune. That means she said her morning prayer in unvarying tune, in the same tune, while she bathed and dressed me in the hope, when she was bathing me, and when she was dressing me, and she was singing this song in a monotonous tune, in an unvarying tune, in a beautiful tone, with the hope that I would listen this and get it to know by heart, so that I may listen it, I may know it, get it to know by heart. वो इसलिए ये सॉन्ग, ये जो सुबह की प्रेयर जो थी उसकी एक अलग थलग आवाज़ में और ब्यूटीफुल आवाज़ में और एक ही टून में वो गाती थी जब वो मुझे नहाती थी और जब मुझे वो ड्रेस करती थी, और इस होप से कि ताकि मैं इसको सुन लूँ और इसके बाद इसको दिल से मैं याद करूँ. I listened because I loved her voice. Writer says that I listened this monotonous prayer of my grandmother and get to know it. I listened this because I loved her voice but never bothered to learn it. But writer says that I never bothered to learn it. मैंने अभी कभी ये जहमत नहीं गवारा किया कि मैं इसको सीख जाऊँ. But I was listening it because I loved the voice of my grandmother. Then she would fetch my wooden slate which she had already washed. Then she would retrieve, that means she would bring. Fetch means bring. She would retrieve, or to get, or to bring. She would bring my wooden slate which she had already washed. जो उसने पहले ही साफ़ किया था,
उसको वो फिर लाती and pasted with yellow chalk, and then she would coat this slate with yellow chalk. A tinny earthen pot, ink pot, एक यानी मिट्टी की बनी हुई एक वो सुराही जिसमें वो अर्दन पॉट जिसमें इंक होती थी, एंड ए रेड पेन, और एक रेड पेन वो मेरे सामने लाती थी, एंड टाई देम ऑल इन ए बंडल, और तमाम उन चीज़ों को वो यानी इंक पॉट को यानी इंक अर्दन इंक पॉट को एंड रेड पेन को, और she would tie them in a bundle and hand it to me. So writer here says that she would fetch me, she would bring my this wooden slate which she had already washed it, and then she would coat it with yellow chalk, and then she would bring this tiny earthen ink pot and red pen and tie them all in a bundle, and then she would hand it to me. Then after breakfast of thick stale chapati with a little butter and sugar spread on it, we went to school. Then she would bring chapatis which are no longer fresh, no fresh chapatis, that means which are no longer fresh. So she would bring the stale chapatis, that means not fresh chapatis, but she would bring also butter and sugar spread on these chapatis, and we would we went to school, and then we started towards the school. She carried several. She carried several. She carried several stale chapatis with her for the village dogs. She would also carry several some chapatis for with her for the village dogs. कुछ जो village dogs होते थे उनके लिए वो कुछ चपाती साथ लाती थी. My grandmother always went to school with me because the school was attached to the temple. My grandmother was always accompanying me up to the school because school was very close to the temple. It was connected to the temple. मेरी दादी माँ मेरे साथ स्कूल हर रोज़ आया करती थी. Always went to school with me. मेरे साथ स्कूल आती थी because the school was attached to the temple. This school was connected to the temple. The priest taught us the alphabet and the morning prayer. Thereat in the temple, it says that this priest would taught us the alphabet, that means the letters, and the morning prayer. वहाँ पे जो पुजारी होता था वो हमें letters सिखाता था और वो morning prayer हमें सिखाता था. While the children sat in rows on either side of the veranda singing the alphabet or the prayer in the chores by chores. Or writer here says that these children would sat in the rows in the lines on either side of the veranda. In temple, the children would sat in either side of the veranda, and in either side they will sat in lines on either side of the veranda, on both on each side of the veranda, singing the alphabet or the prayer in the chores. Chores means here in the groups. They would then uh, sing the alphabets in the groups, sing the prayer, listen. They would sit in lines and they would sing the alphabet or the prayer in the groups. My grandmother sat inside reading the scriptures. My grandmother, she actually sat inside the temple, and then she wrote their scriptures. She read their scriptures, and she read actually the holy books. वो मतलब किताबें वहाँ मंदिर में पढ़ती थी, जो मंदिर की किताबें होती थी उनको वो पढ़ती थी. So when we had finished, we would walk back to together. फिर हम दोबारा चलते थे. This time the village dogs would meet us at the temple door. और इस वक्त क्या होता था कि ये जो village dogs होते थे
दे वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर, इस टेम्पल जो मंदिर है, मंदिर के दरवाजे के नज़दीक हमें वो मिलते थे. दे वुड फॉलो अस टू आवर growing and fighting with each other. They would follow us. They would follow us. वो हमारे साथ आते थे, हमारे पीछे पीछे आते थे. Home growling, that means they were grumbling or they were making beep sounds made in throat. यानी जो गले में वो थोड़ी सी वो आवाज़ निकालते थे, कुत्ते जो निकालते हैं तो उसी किस्म की आवाज़ वो निकालते थे. एंड फाइटिंग विच ईच अदर, और वो एक दूसरे के साथ फाइट करते थे. फॉर द चपातीज, फॉर द ब्रेड विच वी थ्रू देम, जो हम उनको फेंकते थे उनके साथ, वो उसमें वो अपने आप के साथ वो लड़ाई करते थे, एक दूसरे के साथ लड़ाई करते थे. और उसके बाद वो दे वर ग्रोलिंग, दे वर क्रैम्बलिंग, दे वर मेकिंग द बीप साउंड्स इन देयर थ्रोट. When my parents when my parents were comfortably settled in the city, जब मेरे पेरेंट्स ठीक तरह से सेटल हो गए इन द सिटी, सिटी में से ठीक तरह से सेटल हो गए, सो दे सेंट फॉर अस, तो उन्होंने हमको भी बुलाया. सो व्हेन कंप्लीटेड my parents were settled in the city, they sent for us, that means they called us. सो उन्होंने हमें भी बुलाया, दे सेंट फॉर अस, हमें भी बुलाया. दिस वॉज ए टर्निंग पॉइंट. सो हियर राइट से दिस वॉज ए टर्निंग पॉइंट, दिस वॉज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप. ऑल्दो वी शेयर्ड द सेम रूम, वहाँ पे जब व्हेन वी वेंट टू द सिटी, वी शेयर्ड द सेम रूम, एक ही कमरे में बैठते थे. माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी, बट माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी. मेरी जो दादी माँ थी वो स्कूल मेरे साथ नहीं आती थी. आई यूज टू गो टू इन एन इंग्लिश स्कूल इन ए मोटर बस. So I was going in the city, I was going to an English school, that too in a motor bus. There were no dogs in the streets, but one thing to mention here, that there were no dogs in the city. And she took to feeding sparrows. Now she was feeding sparrows in the courtyard, in an open space of our city house. So there were no dogs. There were no dogs in the street. I used to go to an English school in a motor bus. मैं वो मोटर बस में स्कूल जाता था, इंग्लिश स्कूल में. But there were no dogs in the streets, and she took to feeding sparrows. What she was doing, she was feeding, she was giving food to the sparrows. चिड़ियाँ होती थी in the courtyard, in the open space. Courtyard means open space of our city house. हमारा जो सिटी हाउस था उसमें जो ओपन स्पेस, सिटी में जो हाउस था और उसमें जो ओपन स्पेस कोर्टयार्ड था, उसी में वो उनको शी वॉज गिविंग फूड, शी वॉज फीडिंग स्पैरोज, चिड़िया जो होते हैं उनको वहाँ पे वो फूड यानी रोटियाँ वगैरह डालती थी. As the years rolled, now as the years rolled, और जो ये साल चलते गए बने, यानी as the road, as the years passes, we saw less of each other. हम एक दूसरे को अब कम देखने लगे. That means as the years passed, now we saw less of each other. We are not seeing each other continuously. We are not meeting each other. We were not meeting continuously. So for some time, she continued to wake me up and get me ready for school. For some time, she continued to wake me. कुछ वक़्त के लिए उसने मुझे बेदार किया नींद से, and get me ready for school, और मुझे स्कूल के लिए वो रेडी करती थी. When I came back the school, when I came back, she would ask me what the teacher. जब मैं स्कूल से वापस आता था, when I came back from the school, she would ask me what the teacher had taught me. Now this is page number 5. Taught me. उस्ताद ने मुझे क्या पढ़ाया? I would tell her the English words and the little things of
or Western science and learning. So when I came back, she would ask me what the teacher has taught me. आपको उस्ताद ने क्या सिखाया? I would tell her English words. मैं उसको इंग्लिश के कुछ अल्फाज बताती थी and little things of Western science and learning. मैं उसको वेस्टर्न साइंस के बारे में कुछ बताती थी. मुझे टीचर ने ये सुना, ये बताया, मुझे टीचर ने ये सिखाया. एंड द ग्रेविटी, द लॉज ऑफ ग्रेविटी, these are the laws of gravity. Laws of gravity, and these laws are related to the growth of earth. So gravity of the earth, these laws are related to the gravity of earth. So Archimedes principle. So the words begin, the world being round एक्स्ट्रा. सो जब मैं वो जो कहती, जब मैं वो जो मुझसे पूछती थी कि आपने क्या सीखा, आई वुड टेल हर द इंग्लिश वर्ड्स. मैं उससे इंग्लिश वर्ड्स बताती थी. एंड द लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस, और मैं कुछ वेस्टर्न साइंस के बारे में उसको बताती थी. ये हमने सीखा. एंड द लॉ ऑफ ग्रेविटी, एंड लॉज ऑफ ग्रेविटी के बारे में उससे कहती थी. आर्चिमेड्स प्रिंसिपल के बारे में कहती थी. these are all things related to the science. The world being round, हमारे इर्द गिर्द जो दुनिया है इसके बारे में बताती थी. This made her unhappy. These words of mine made her unhappy. उसको ये बड़ा नाखुश लगता था. She would not help me with my lessons. She would not help me with my lessons. वो मेरी जो लेसन्स होते थे उनको, उनमें वो हेल्प अब नहीं कर सकती थी. शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड. क्योंकि शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स, इन चीज़ों पे, इन जो ये सीखते थे, जो मैं सीखता था. रेट सेज, रेट कहता है कि जो मैं ये न्यू लर्निंग स्कूल में सीखता था, तो इनमें वो इंटरेस्टेड नहीं थी. क्योंकि शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दैट दे टॉट अस एट द इंग्लिश स्कूल. जो इंग्लिश स्कूल में मुझे हमें पढ़ाते थे, शी वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन दीज थिंग्स एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड. एंड वो बिल्कुल सैड होती थी. एंड शी बिकेम सैड, बड़ी मायूस होती थी. दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट द गॉड. And she was giving me the understanding that there is no teaching about the God. अल्लाह के बारे में, गॉड के मतलब वहाँ पे कुछ नहीं सिखाया जाता है. एंड द स्क्रिप्चर्स, और जो होली बुक है उसके बारे में भी कुछ नहीं सिखाते वहाँ. One day I announced that we were being given music lessons. एक दिन I announced, मैंने ये अनाउंस किया कि मैंने दादी माँ को कहा कि वी आर बीइंग गिवन म्यूज़िक लेसन्स, अब हमें म्यूज़िक लेसन्स दिए जाते हैं. सो शी वॉज वेरी मच डिस्टर्ब्ड. वो बहुत ही मायूस हो गई, बहुत सैड हो गई. टू हर म्यूज़िक हैड लिव्ड एसोसिएशंस. ये जो म्यूज़िक है उसके लिए क्या था? टू हर म्यूज़िक हैड लिव्ड एसोसिएशंस. ये एक रूड एसोसिएशन है, एक रूड कनेक्शन है. इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हॉर्लोट्स. इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हॉर्लोट्स. इट इज़ द एक्सरसाइज ऑफ, it is exclusive for the prostitutes, right? It is work of the prostitutes. वो इसको तस्वर करते शायद ये उन लोगों के जो अच्छे लोग नहीं हैं, prostitutes, उनके लिए उनका काम है. एंड बेगर्स, और जो बेगर्स होते हैं, भीख मांगने वाले, उनके लिए ये काम है. एंड नॉट मीन फॉर जनरल folk, और जो अच्छे लोग हैं उनके लिए ये नहीं है. So she was not interested in the music because वो सोचती थी कि ये एक मोनोपोली है किसकी, ये एक एक्सक्लूसिव राइट है किनका? prostitutes का, अच्छे लोगों का नहीं है. एंड beggars, it's work of beggars, जो भीख मांगते हैं. not for gentlemen,
Gentlefolk जो अच्छे लोग हैं उनका उनका काम ये नहीं है. She said nothing but her silence meant disapproval. वो कुछ नहीं कहती थी, but her silence, उसका जो चुप रहना, और it means disapproval, it means disagreement. She rarely talked to me after that. After that, right, says that she hardly talked to me. वो मेरी तरह मेरे साथ उस दिन से, आफ्टर दैट उस वक़्त से वो मेरे साथ ठीक तरह से बात नहीं करती थी. when I announced that music lessons are being given as in the school, so she was not agreeing this. It was actually, her silence was actually the disapproval. It was actually the disagreement. Thank you very much. This was all about today's lesson. Hope आपने ये ठीक तरह से अंडरस्टैंड किया होगा. थैंक यू.